MCQ number 1, session 26. A 18-year-old boy brought by parents with complaint that for last 6 months he sees a fairy and wants to marry her. And now he says that his neighbor is interested in that fairy. What will be the most appropriate diagnosis? तो ये जो है malingering नहीं हो सकता बिकॉज ये जो है अपने सिम्टम्स को फॉल्सिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, हेलुसिनेट कर रहा है, ठीक है। इसके थॉट डिसऑर्डर्स हैं कि उसका जो नेबर है वो उसके साथ इंटरेस्टेड है, ठीक है। डिलीरियम नहीं हो सकता है, एक्यूट कंफ्यूज स्टेट में ये नहीं है बिकॉज ये लास्ट 6 मंथ से ये चल रहा है। डिमेंशिया नहीं हो सकता, इसे लॉस ऑफ मेमोरी नहीं है, ठीक है। मेनिया भी नहीं हो सकता बिकॉज मेनिया में जो होता है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो होता है, ठीक है, एक मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन होता है। मेनिया में जो है वो परसिस्टेंटली हाई यूफोरिक मूड में होता है, ठीक है, उसमें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, क्या कहते हैं, यूफोरिक मूड उसमें ज़्यादा होता है। और साइकोसिस जो है, ठीक है, ये इसके साथ फिट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज जो है इट इज़ नॉट अ डायग्नोसिस बट ए क्लास ऑफ इलनेस। और सर जिस तरह कह रहे थे कि ये डिप्रेशन के साथ हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ थॉट डिसऑर्डर भी आ जाता है, ठीक है, डिल्यूजन्स भी होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो ये जो है ये डायग्नोज जो है साइकोसिस में फिट होते हैं। A 45-year-old man brought by relatives with complaints that for last 4 months he says he is the messenger of God. He sleeps less and eats large amount of food. He tries to speak in front of people as preacher. He resists for medical checkup. What will be the most appropriate initial step in management before referral? तो ये जो है स्किज़ोफ्रेनिक वो है, ठीक है, इससे डिलूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, थॉट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, ठीक है। और ये कहता है ही ट्राइज टू स्पीच इन फ्रंट ऑफ पीपल एज प्रीचर एंड ही रेजिस्ट फॉर मेडिकल चेकअप। तो उसे लैक ऑफ इंसाइट पे कि क्या कह रहा है, क्या वो कर रहा है, और उसे अपना आप ठीक लगता है कि आई एम फाइन। तो ये जो है स्किज़ोफ्रेनिक उसमें आता है। तो the appropriate management will be risperidone. A known male patient of psychosis comes to see you for regular checkup. He is taking lithium for 4 weeks. His condition is stable on the same dose. When will you recheck his lithium level? तो मैंने रिसर्च बहुत की है, तो यहाँ पर जो इसके जो नाइस गाइडलाइंस हैं, तो इसमें ये कि lithium levels are normally 33-year-old male patient brought by his relative who tells you that he has attempted suicide. Patient says that when he thinks about his girlfriend, everyone listens to his thoughts. Even the whole town is listening to the his thoughts on the radio. What will be the most appropriate drug for this patient? तो ये भी स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर में आ जाता है, ठीक है। उसमें एक थॉट डिसऑर्डर होता है, उस तरह उसे लग रहा होता है कि ये उसके थॉट्स जो है, ठीक है, इट इज़ ब्रॉडकास्टेड टू एवरीवन लाइक ऑन अ रेडियो। So this is also the schizophrenic disorder, or the most appropriate drug for this patient will be risperidone. A 52-year-old teacher presents with lethargy and weakness during her daily routine activities. Her appetite has decreased and now she feels irritable during the daytime. She visits her friends routinely and teaching her students. What is her most probable diagnosis? तो somatization ये हो नहीं सकती because she is not exaggerating her symptoms because of some other stress induced कोई symptom नहीं है। Major depression भी नहीं हो सकता because to label someone with major depression 5 or more depressive symptoms for more than 2 weeks होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे symptoms है, इसमें अगर आप चेक कर लो, she feels lethargic and weak, तो 1 हो गया ये fatigue और loss of energy, her appetite is decreased, 2, and she feels irritable, psychomotor changes are agitated। लेकिन लेकिन ये क्या है, शी विजिट्स हर फ्रेंड्स रूटीनली एंड टीचर्स हर स्टूडेंट। तो इतना ज़्यादा मार्क फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं, तो
three symptoms हैं and there is mild functional impairment and it is more than 2 weeks. तो ये जो है mild depression. 17-year-old girl presents with recurrent attacks of low mood and lack of interest in daily activities. She is putting on weight and likes to sleep the whole day. She has craving for bread and cereals, especially in winter. What is the best choice of drug for her? तो शी हैज़ लो मूड्स, ठीक है, ऊपर से जो है शी इज़ पुटिंग ऑन वेट. तो जिस तरह एंटी डिप्रेसेंट्स के जो है कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन है, बट इट इज़ अनलाइकली विद दी एस एस आर आईज. तो एस एस आर आई इसमें कौन सा है, सर्ट्रालिन है. तो द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर हर इज सर्ट्रालिन, क्योंकि ये वेट गेन नहीं करता. A 70-year-old man comes to you with moderate symptoms of depression. He is also suffering from prostatism and glaucoma. Which drug is contraindicated in him? तो ये एमिट्रिप्टालिन है. इस तरह सर के प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि ये हम लोग प्रोस्टेट के उसमें नहीं देंगे. A 28-year-old businessman comes with severe headache, palpitation and flushing. His BP is 180 by 110. Last night he attended a party where he used wine. He is already on some medication. The best, which drug he is most likely using is phenelzine. Monoamine oxidase inhibitors हैं, ठीक है, ये जो है अल्कोहल में टायरामीन का काउंटर होता है, तो इसके साथ ये रिएक्शन करता है. तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट ड्रग जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज फेनल्जीन. A 40-year-old male presents with dry mouth, polyuria, and polydipsia. He is using some medicine from quite some time prescribed by psychiatrist. Which drug is responsible for his symptoms? So the answer is lithium. ठीक है, लिथियम की जो साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इट इंक्लूड्स थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया. ठीक है, so the drug responsible for his symptoms is lithium. A 40-year-old housewife presents with headache, decreased appetite, and disturbed sleep. She is also having severe burning pain in the hands. What is the most suitable drug for her? तो प्रेजेंटेशन में जिस तरह सर ने कहा हुआ था कि किसी को अगर एंजाइटी हो उसके साथ, ठीक है, तो हम उसे जो है एस एस आर आईज देंगे. किसी को पेन हो रहा हो तो पेन के लिए अच्छा ड्रग जो है, दोज आर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो हम उसे एमिट्रिप्टालिन देंगे. तो द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर हर जो है, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप वो है, और पेन के लिए जो अच्छा ड्रग है दैट इज एमिट्रिप्टालिन अकॉर्डिंग टू सर्स प्रेजेंटेशन. 16-year-old boy is brought by his parents complaining that his behavior is quite rude at home and misbehaves with teachers at school. Whenever there is gathering or guests at home, he tries to avoid them. What could be the most appropriate management for him? तो जो है इसमें कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं है, कोई स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो कोई लो मूड या वो वाली बात नहीं है. तो हम रियश्योर करेंगे दैट देयर इज़ नो ऑर्गेनिक डिजीज फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, तो टीनेज बॉय हम, तो इसके साथ ये रियश्योर कर देंगे कि देयर इज़ नो ऑर्गेनिक डिजीज or anything wrong with him. 20-year-old male presents with itching, abdominal pain, attacks of diarrhea off and on, and weakness of right arm in front of others for last 1 month. His physical checkup is normal and lab reports are remarkable. What is the most probable diagnosis? So this is Munchausen syndrome. ठीक है, सर ने जिस तरह कहा हुआ था कि ये वाले सिंड्रोम वाले जो लोग होते हैं, ये डिलिबरेटली अपने आप को फेक फिजिकल इलनेस उसमें मुब्तला करते हैं, और लैब रिपोर्ट्स और टेस्ट कभी किसी जानवर से लेके आते हैं, तो वो लेके आते हैं, तो उनके जो अगर आप टेस्ट कर लो तो आपको जो है बड़ा अजीब सा लगेगा ये कहाँ से आ गया. ठीक है, तो नॉर्मल से कहीं बहुत ज़्यादा वेरी करेगा. तो दिस इज मंचाउजन सिंड्रोम, कि उसके फिजिकल चेकअप वो नॉर्मल था लेकिन लैब रिपोर्ट्स वर रिमार्केबल. 40-year-old patient comes with breathlessness on exertion and chest pain. He is Mason by profession and do not have any symptoms while working. He has been sent by an insurance company to evaluate his illness. What is the most probable diagnosis? तो ये आता है pure malingering में. He is falsifying all of his symptoms.
ठीक है। और ऊपर से जो है ये इंश्योरेंस कंपनी वाली बात भी है, ये तो इसे जो है फाइनेंशियल गेन भी इससे मिल रहा है। ऊपर से जो है ब्रेथलेसनेस ऑन एग्जर्शन हो जाता है, लेकिन अगर वो काम करो तो काम में कोई वो नहीं होता, कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो ही इज़ फॉल्सिफाइंग इट। तो इनमें जो है इट इज़ प्योर मेलिंगरिंग। फैक्टिशियस जो है वो नहीं हो सकता अपने, जैसे कि अपने आप को जख्मी किया हो या वो किया हो, ठीक है। मंचाउजन नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो है कोई रिमार्केबल कोई लैब रिपोर्ट्स नहीं लिखा है। पार्शल मेलिंगरिंग नहीं हो सकता, ठीक है। जो क्या कहते हैं, अपने आप को इस तरह एग्जेजरेट नहीं किया हुआ कि वो उसका काम या डेली फंक्शन मुतासर हो, बिकॉज ही इज़ वर्किंग और उसे वर्क में कोई सिम्टम्स नहीं होता। सिमुलेशन ये होता है कि किसी चीज़ कोई चीज़ देखी होती है, जैसे माइग्रेन देखा होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया देखा होता है, तो वो उसी को ही कॉपी कर लेता है। तो प्योर मलिंगरिंग उस पर आ जाता है बिकॉज ही इज फॉल्सिफाइंग ऑल ऑफ हिज सिम्टम्स। 6-year-old child is brought by his mother repeatedly for abdominal pain and headache. He found bruises on his body at different stages. What will be your next step in this management? तो यहाँ पर फैक्टिशियस डिसऑर्डर बाय प्रॉक्सी आ जाता है, ठीक है, कि उसे डिलिबरेटली बच्चे को जो है वो अक्सर बीमार किया जाता है, ठीक है, उसे हार्म किया जाता है, ठीक है। टेकिंग सिम्टम्स ऑफ अ चाइल्ड इन देयर केयर अक्सर पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो केसेस होते थे उसमें जो है एब्यूज़ का वो क्या कहते हैं एलिमेंट शामिल हो जाते थे। तो what we do is we involve all the relevant agencies about the abuse. A 50-year-old alcoholic man presents with difficulty in chewing and nasal tone of voice for 1 week. His son complains of loss of memory of his father. What is the probable diagnosis? तो ये vascular dementia, because there is a stepwise progression with each subsequent infarct, ठीक है। अभी जो है ये chewing और nasal twang की बारी आई थी, तो अब फर्दर जो है ये और सब्सिक्वेंट चोट इन्फार्क्ट के साथ ये और भी सिम्टम्स ये शो करेगा। So this is vascular dementia. A 60-year-old patient presents with gradual loss in memory and inability to perform simple tasks. His clothes are dirty. He is taking thyroxine 150 microgram daily. What is the most probable diagnosis? So this person is having Alzheimer's dementia. ठीक है, तो one of the risk factors is hypothyroidism. So he is taking thyroxine for his hypothyroidism. So ये जो है, ठीक है, this is Alzheimer's disease. 65-year-old patient presents with loss of short-term memory. His son told that he was caught stealing things in a departmental store. What is the most probable diagnosis? तो इसका diagnosis है Pick's dementia. इस dementia में personality changes आ जाते हैं with frontal lobe signs, ठीक है। वो inappropriate से हरकतें start कर देता है, like stealing या practical jokes होते हैं, practical pranks होते हैं, ठीक है। तो इसकी treatment supportive है। 60-year-old male brought by his son with complaint of loss of memory. His son told that he often talks to his dead wife. So which medicine is safe for him? तो हम उसे benzodiazepines देंगे, ठीक है। There is no specific treatment for this and we avoid antipsychotics in this thing. तो इसके लिए जो है safe जो drug है, we give them benzodiazepines. A 35-year-old divorced pharmacist presents to discuss her suicidal thoughts. She is living alone. What is the most appropriate step? तो divorced pharmacist है ये, ठीक है, she is having suicidal thoughts और she is living alone. So this is क्या कहते हैं severe form suicidal thoughts आ रहे हैं, she is living alone. She can harm herself. तो अच्छा जो ऑप्शन होगा इसके लिए दैट विल बी हॉस्पिटल एडमिशन, बिकॉज होम सुपरविजन और बाकी चीज़ें जो हैं, ठीक है, होम सुपरविजन में भी ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। पेरेंट्स हो गए, ठीक है, इसमें सुसाइडल थॉट्स में जो है डिप्रेशंस और ये चीज़ें जो है वो तो अवॉइड तो इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन इन दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ताकि वो अपने आप को हार्म ना कर पाए। 17-year-old female presents with intense fear of weight gain. She has amenorrhea for 4 months. Her BMI is 16. She is taking erythrocin for her sore throat. Which investigation is most
important for follow-up. तो जो this is the picture of anorexia. तो पेशेंट जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया हो सकता, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से एरिथमियास कॉज हो सकते हैं, एंड फॉर दैट हमने ईसीजी करना है टू कैच दी एनी एरिथमियास, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस में जो है वी आर गोइंग टू चेक ईसीजी। जो फर्स्ट थिंग है वो हम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, बट उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो मेन जो है, ठीक है, hypokalemia, hyponatremia की वजह से arrhythmias होते, तो for that we're going to order ECG. A 25-year-old female presents with episodes of binge eating followed by laxative intake. Her periods are normal and BMI is 24. What is the drug of choice? So this is the picture of bulimia nervosa, ठीक है। सेल्फ इमेज इनकी वो ड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी शेप, इनअप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर्स ये लोग करते हैं, लाइक टेकिंग लैक्सेटिव, जिस तरह उसमें कहा हुआ है, ठीक है, स्टेम में। तो फॉर जो की में लिखा हुआ है द ड्रग इज सिब्यूट्रामीन, और सर के लेक्चर में जो है दैट इज फ्लॉक्सेटिन। सो आई वुड लाइक यू गाइस कि इस पे इनपुट वो कर ले कि सिब्यूट्रामीन, why is sibutramine the key and not fluoxetine? 18-year-old female presented with the complaints of sensitivity to the noise, palpitations, dryness of mouth, and hand tremors. Her pulse found 100 per minute and regular other general and physical examination is normal. You started tablet diazepam alone for her condition. For how much duration it should not exceed? तो कोई बेंजोडाइजेपिन ऐड करते हैं, ठीक है, तो विद इन फर्स्ट वीक या 2 वीक कोई और एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआईज वो के साथ हम इसलिए ऐड कर लेते हैं बिकॉज इनिशियली एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके साथ, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 वीक पीरियड के लिए दे देते हैं, बट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 वीक्स बिकॉज डिपेंडेंसी इस पे हो जाती है, ठीक है। तो इसका की है 2 to 4 वीक्स। 4 वीक से ज़्यादा हम देंगे नहीं बिकॉज पेशेंट बेंजोडाइजेपिन पे डिपेंडेंट हो जाता है। 18-year-old female presented with restlessness, irritability, tremors, dizziness, and headache. You prescribed bromazepam thrice a day initially and then added paroxetine 50 mg once a day. She feels much better. For how long paroxetine should be continued? तो कोई भी एंटी डिप्रेसेंट शुरू करते तो हम उसे मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि उससे जो है उसकी डज द पेशेंट फील बेटर और नॉट। वो डोज जहाँ पर पेशेंट सोचता है कि दे आर कंट्रोलिंग देयर डिप्रेशन मच बेटर, तो वी कंटिन्यू दैट डोज फॉर 6 मंथ्स। देन हम 6 मंथ्स तक ये डोज जारी रखते हैं। Then, when we want to stop it, we taper it slowly. A 16-year-old girl complained of increased heart rate, dry mouth, and tremors when her teacher asks her a question. She sits in a last row and tries to hide herself from her teacher behind other girls. What is the most probable diagnosis? So, this girl is having social phobia. ठीक है, तो वो जो है टीचर को आंसर करने से घबराती है, तो शी इज हैविंग सोशल फोबिया। 26-year-old complains of tremors, palpitation, and fearful anticipation whenever he has to go to supermarket for shopping and prefer to stay at home. What is the most probable diagnosis? तो this is agoraphobia. अगोराफोबिया जो है ये पैनिक अटैक्स होते हैं, ठीक है। वो उससे लग रहा है जैसे दे हैव अ फियर ऑफ फेंटिंग एंड दे हैव लॉस लॉस ऑफ कंट्रोल इन क्राउड्स, ठीक है। तो क्राउड में ये लोग जो है पैनिक में आ जाते हैं। तो 28 का जो है की है दैट इज एगोराफोबिया। A 29-year-old female comes and tells you that 3 months back she had complaints of choking, shortness of breath, flushes, and fear of dying without any recognizable problem. She is afraid of having another attack and asking you repeatedly that will she have this problem again. Her lab tests and physical examination is normal. What is the most probable diagnosis for her condition? तो ये जो है शी इज हैविंग पैनिक डिसऑर्डर,
इसे पैनिक हो रहा है, ठीक है। पैनिक अटैक इसलिए नहीं है बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस होता है और सिचुएशनल हो जाता है, लेकिन ऐसे जो है 3 मंथ्स से तो एक क्रॉनिक रिकरेंट पैटर्न में आ रहा है बार बार, ठीक है। परसिस्टेंट फियर होता है उससे, ठीक है। तो दिस पर्सन इज हैविंग पैनिक डिसऑर्डर। 33-year-old male complains of pain in his lower left side of his ribs persistently for last many months. His X-ray and lab tests are normal. On exploring more, he told you that he has two deaf and dumb children and had business loss too. Which of the following condition describes this condition? तो इसमें जो है this person is having somatization disorder because patient जो है उसके lab tests और वो normal है और वो अपने आपको जो है अपना हाल बता देता है, ऊपर से बिजनेस लॉस भी है, तो उसकी जो स्ट्रेस है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में आ गई है। सो दिस पर्सन इज हैविंग सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर।